Yogi Surajnath, Guru Budnath ji, with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakh Nath. Sabadi number 12, 12. sāramasārã gahara gambhīrã, gagana uchaliyā nādã, mānika pāyā pheri kāyā, jhūṭhā bāda-bibādã. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. The heart of it all is deep, profound. The nādã burst out in the firmament, found a ruby, wondering is over. All debate is just lies. Some explanation स्पष्टीकरण in both हिंदी and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. गगन uchaliyā नाद. नाद नाद मतलब ध्वनि, साउंड, शब्द, तरंग जो घटित हो रहा है भीतर और बाहर, जो घटित हो रहा है. हमारे शरीर में हलन चलन है, पवन है, तो हलन चलन मतलब कंपन, तरंग. जहाँ तरंग है, कंपन है, हलन चलन है, वहाँ नाद है. और भीतर बाहर सारा जगत मूल रूप से नाद स्वरूप है, कंपन स्वरूप है, तरंग स्वरूप है, वेदना स्वरूप है, भाव पवना स्वरूप है. और यही जीवन गति है. इसी के प्रति हम चेतन होते हैं. विचार करने वाला जो भूत भविष्य के साथ काम करता है, विचार इंद्रिय, वो इंद्रिय व्याख्या में रखते हुए उसको अपनी जगह, दुनियादारी में उसकी अपनी जगह है, वो समझकर, उसकी मर्यादा समझकर उसको बैक साइड में रख दिया. अपने आप वो समझ जाता है कि मैं टाइम मैटर हूँ, टाइम मोमेंट इन टाइम हूँ, काल की गति हूँ, काल में गति हूँ, भूत भविष्य में गति हूँ. तो और वर्तमानता में उसकी जीने की क्षमता नहीं है, तो वो अपने आप को बैक में कर देता है. और बाकी इंद्रिया, घटपिंड जो है चेतन, अपने आप से चेतन है और चेतन हो जाता है. विचार के प्रभाव से मुक्त होकर के चेतन होता है. सो उसकी चेतनता गहरा जाती है, तीक्ष्ण होती है, स्पष्ट होती है. और वो जीवन गति को, तरंग गति को, भाव पवना, वेदना को जानते रहता है, जो मूल रूप में नाद है, साउंड है, ध्वनि, शब्द है. सो इस तरह से जब हम चेतन होते हैं, गतिमान सत्य के प्रति, जो हवा का झोंका है, ये पत्तों की ध्वनियाँ है, इनका जो नाजुकता है, जो भी बात है, सुनने में, देखने में, महसूस करने में ताजगी होती है. सारा जीवन खुला होता है. उसमें गहराना अपने आप से होता है. गहराने की बात, विचार की गहराने की बात हमेशा आंशिक होती है, डिवाइडेड एंड डायरेक्टेड होती है, किसी एक क्षेत्र में होती है. वो जीवन दर्शी नहीं होती, वो विशिष्ट दर्शी होती है. विशेष दर्शी नहीं होती, विशिष्ट दर्शी होती है विचार की बात. मगर वर्तमानता की बात, सारी इंद्रिया सहज, शरीर मन सहज चेतन होते हुए जीवन दर्शिता होती है. और इसी को दर्शनी कहते हैं, दर्शनी जोगी कहते हैं. शिव यानी मंगल, शिव की काया यानी मंगलता का प्रतीक है, मंगलता है. वर्तमानता अपने आप में मंगलता है, शून्यता है, बालापन है, निरागसता है, ताजगी है, फ्रेशनेस है. सो सारमसार गहर गंभीर, इसकी गहनता और गंभीरता के बारे में कोई बखान करने की बात नहीं है. ये जीते हुए सादगी के साथ जानने की बात है. जैसा बालापन है, जैसा एक लैम्प है, बकरी का बच्चा है, मेमना, कितना तरल होता है, कितना स्फूर्त होता है, कितना ताजगी से होता है, सहज होता है. तो उस तरह से हम चेतन बने तो जीवन में गहराते जाए बाला हो. वो
मेमने की अपनी मगज की क्षमता है, उस दायरे में वो रहेगा। मगर मनुष्य जब उस तरह से बालापन से होता है, विचार से मुक्त, विचार की जगह और मर्यादा समझकर विचार को कुशलता से इस्तेमाल करते हुए भी यथा आवश्यक मुक्त होता है, विचार श्रृंखला चलते हुए भी दर्शनी होता है, उसकी गहनता की क्या कहे। वो वर्तमानता है, अपने आप में आर पार देशिता है। विचार इस जगत की बात है, वर्तमानता परे जगत की बात है, कालातीतता की बात है, अपने आप में कालातीतता है। सो ये नाद की अंतर समझ, जब नाद की अंतर अनहद नाद, इस तरह से नाद है, भीतर बाहर नाद है, तो नाद की एक विशेष अंतर समझ में वैसे तो, और उसकी कोई वो चमत्कार जगह हमारे भीतर वो अपेक्षा नहीं। वही ट्रैक्टर का चल रहा है, गियर की आवाज़, चिड़ियों पक्षियों का आवाज़ चल रहा है, ये कीटों का गुंजन चल रहा है। इसी नाद को हमारे भीतर जो महसूस होता है, हम हर चीज़ इंद्रियों के मार्फत शरीर पर महसूस करते हैं। हम यदि शरीर के साथ शरीर पर नहीं है तो हम विचार में होते, भूत भविष्य में होते, सादी बात है। गगन उछलिया नाद, जब नाद की अपने आप में अंतर समझ होती है, विशेष अंतर समझ होती है, तो उसमें विचार श्रृंखला का स्थगन होता है, अपने आप से समाधि जैसी बात होती है वो, और चेतना सहज गतिमान होती है। विचार श्रृंखला नहीं है तो वर्तमानता सहज है, भटकन नहीं है या कम है। इस तरह से ठीक है, वो मिले ना मिले उसके बगैर उसके मिलने से ही काम शुरू होगा, ऐसा नहीं। जैसे भी चेतन हम रहे उसी में हमारा काम पूरी तरह से शुरू हो सकता है, और पहला सही कदम आखिरी कदम होता है आपका सारा सफ़र। वो गहनता, वो अनहद की अंतर समझ जिसमें विचार श्रृंखला रुकती है, ना भी मिले आपको तो आपका सफ़र जो है आध्यात्मिक आंतरिक सफ़र पूरी तरह से गतिमान हो सकता है, पूरी तरह से गतिमान, उसके जागने से भी गतिमान रहेगा। गगन उछलिया नाद, सो उसमें वर्तमानता है, तो भूत भविष्य की तृष्णा विचार गामिता नहीं है, सो आवागमन नहीं है। फेरी लुंकाया, अब वो समाधि में, उन्मन में अपने आप में एक चैतसिक स्थगन होता है, विचार का स्थगन होता है, अपने आप में विचार का अंत होता है, ऐसा नहीं। उसमें हमें भाव पौना को, जीवन गति को दर्शनीय रहना ही होता है। उसमें भी जीवन गति के प्रति हम दर्शनीय नहीं है तो वो स्थगन होगा, वो काल वंचन होगा, काल का अंत नहीं, काल का अंत जरूरी है। और इसमें कोई वाद विवाद की कोई जगह नहीं है, ये जीने की कला है, जीने की बात है प्रत्यक्ष रूप से। झूठा वाद विवाद, सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। So this the heart of it all is deep and profound of what the nad burst out in the firmament. You see, nad means sound. जैसे कि ये as this bird is singing, tithari, in a local language it is called titvi or tithari, or any thrilling sounds of insects. This tender leaves and their fluttering, this breeze. So and within the body, as these are movements outside, so there are movements within the body. And what these movements are? They are vibrations, they are sensations, they are tensions, they are expressions. And that is what, that way we are alive, living. If that is gone, dead body, burn or bury. So this movement, this vibration, and where there is movement, there is vibration, there is sound. And the awareness of this sound, of this vibration, of these movements, of these expressions, of sensations, feelings, tensions, it's awareness, not thinking about it, but just being aware, knowing the place and limit of thought in day-to-day life. Place of thought in day-to-day life, without which day-to-day life is impossible, and its limit that it cannot come unto the present and live it. No, it has no potential. So understanding its place in day-to-day life, its scope and its limit, that it is time, and if we live by time, thought, desire and time, so time, we are in past or future, we are in time. And so the causation of time,
these laws of nature that implies in time applied there automatically. It is the order of nature at all levels, at the level of name and form, space and time, at the level of thought and time. And presence is beyond capacity. Presence is the ultimate capacity. Presence in itself is the ultimate capacity of our consciousness, and this is not in time. This is timelessness in itself. So to live by presence, to get insight into it, and we will get insight into the presence by living it, not by thought, but not by ideal, not by calculation, not by judging, analyzing. No, not impossible by nature. No. So when we get insight into this, by observing, by being aware of these sounds, vibrations, sensations, expressions, continuously, again and again, coming to it, living it, actually, without ideal, that peacock. So, thought cannot know what the significance, what depth this presence implies, is contained in it. No. Live it, and the life and its depth, its mysteries, all is open for us. All is just open. So we penetrate into life. We don't expect where to penetrate. Just being aware is penetration. And its art is deep and profound, beyond the capacities, beyond the limits of thought and time, of thinking, of all our potentials, capacities by thought. No. So it is deep and profound. Presence is infinite, or beyond that, it is boundless. Presence is boundless. Thought is infinite. 1, 2, 3, 4, but always in the dimension of measure, in the limits, with the limits of measure. Presence is not just infinite, no, it is boundless. Ashim, not just anand, infinite, but it is Ashim, it is boundless. It has no boundaries of 1, 2, 3, 4, infinity. No boundary, no measure, no calculation. So the heart of it is deep and profound, and it is here and now. When the Nath, and this, when we are aware of the sounds, sensations, expressions, some of the sadhakas get insight into nādã, or sounding, that is every time going on there. It is a matter of sensitivity. Some become more sensitive to sound, some become more sensitive to feeling, expression, some become more sensitive to sensation, tensions, some become more sensitive to colors. All this, each and every leaf of this tree, all these pebbles, these stones, pebbles, all these mangoes, trees, grass, plants, whatever, this earth, have infinite shades of colors. If we just look, so many shades of colors. So that we being aware of that color. These are different sensitivities. Okay, all right. Maybe it's sensitive, more sensitive. Some is more sensitive to physics, somebody else is to chemistry, to mathematics, to arts, to singing, to music, to cooking, to farming, to administration, to political things. With their politicians, they control, but they are so cunning, clever. So we see in general they are not honest. They are very clever. In general, we can see that. Unfortunate. We have so the bodhi, the sense of bodhi, the sense of this alak sense, and anitya, insight into impermanence, and insight into freedom from the known by knowing its place and limit of thought. So that honesty, that vulnerability, like being a lamb, being a child, bala, as Gorakh says, Gorakh bala. And that way, each in thought, whether we are getting bigger in daily life, in politics or not, but living this life and being life itself, life living through us, awake, alert. That way, its depths are profound. It's deep and profound by itself. So, this being aware of this nādã, okay, we are being aware of this nādã, continuously being more sensitive to nādã, to sounds, more sensitive to sounds, vibrating,
that is sounding. Vibrating, that is sensations, is one thing. Vibrating, that is expressions, is another thing. Vibrating, that is different colors, shades, is another, yet another shade, another thing. And vibrating, that is sounds, is another. It's just one of these, all these things. So being aware of this sounding, so you are aware of what is, and the rest. And that way, maybe that these chattering thoughts are silenced automatically. It is like getting into samadhi, nādã, unmana, anahada, getting into anahada, getting insight into anahada, unbound sound, the unbound nature of sounding, or the above unman, above normal mind, above mind, normal mind, chattering mind, thinking mind. So above that, so unmana, so anahada, unbound, no limit, just here and now. So where limit? Limit is always in space and time, in direction and destination, in time. So but in the presence, no limit, unbound, no thought and dimension. So when nādã sounding, we get insight into sounding nādã, anahada nādã, then thought chattering is silenced. But in that tune we need to be awake, alert, towards whatever is we are feeling. Otherwise we may get into samadhi and with that kind of peace, bliss, a calm state of mind, and we may like that and get attracted to that and like to live that instead of getting this, facing these troubles of life that come up from within and around. With that insight into unbound nādã, that just you are aware of the soundings, vibratings in the body and around, and chattering is silenced. All right, good. But in that too, in the mirror of relationship and in your aloneness as well, this movement is there, life is moving. So being aware of that as well, so the emptying, and it is burning in the fire. So we need to be open to burning in the fire. Not seek for some peace, for some trance, but let us be open to burning in the fire, dying psychologically. That is sweet, actual, unburdening, emptying and getting into life inside. Found there be, wandering is over, all debate is just lies. No need of any debate. Presence is beyond debates, beyond thought and time. Let us leave it.